Okay, we'll now discuss the next part of our chapter number 3, that is what are the types of audit evidence. तो audit evidence के कितने टाइप है होते हैं वो डिपेंड करता है अपॉन द नेचर एंड अपॉन द सोर्स. नेचर के हिसाब से विजुअल, ओरल, डॉक्यूमेंट्री, और सोर्स के हिसाब से इंटरनल एंड एक्सटर्नल. तो डिपेंडिंग अपॉन नेचर VOD का मेमोरी टेक्निक आप याद रख सकते हो, दैट इज विजुअल, ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री. विजुअल फॉर एग्जाम्पल obtaining physical in verification, observe करना, physical verification of inventory conducted by the client's staff. Oral में discussion with the management and various officers of the client. Documentary में for example fixed deposit certificate, loan agreement, sales bill, etc. Source के हिसाब से it is internal evidence and external evidence. Evidence which originates within the organization being audited is internal evidence, and the evidence that generates outside the client's organization is external evidence. Internal evidence के examples क्या होंगे? Sales invoice, copies of sales challan, forwarding notes, goods received note, inspection report, copies of cash memo, debit and credit notes. पर एक्सटर्नल एविडेंस में आपके क्या एग्जाम्पल्स होंगे? परचेज इनवॉइस, suppliers challan, forwarding note, debit note and credit notes coming from those parties, quotations and confirmations. तो अगर ऑडिट सिचुएशन में क्या कभी कभार क्या होता है दैट द बल्क ऑफ एविडेंस दैट एन ऑडिटर गेट्स इज इंटरनल इन नेचर. तो ज़्यादातर जो वो एविडेंस लेके आता है वो इंटरनल इन नेचर होता है, लेकिन हाउ एवर कुछ substantial external evidence is also available to the auditor. Since the origination of internal evidence, the client and his staff have those control on them, auditor careful होना चाहिए in putting reliance on such evidence. It is not suggested कि वो, इसका मतलब केयरफुल होना है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि ये सजेस्ट किया जाएगा कि they are to be suspected, but the auditor has to be alive to the possibilities of manipulation and creation of false and misleading evidence to suit the client or his staff, right? So the external evidence को generally इस वजह से the external evidence जो होता है generally considered to be more reliable, as they come from the third party who are not normally interested in the manipulation of the accounting information of others. However, if the auditor has any reason to doubt the independence of the third party, वैसे तो थर्ड पार्टी से एविडेंस आए तो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी मोर रिलायबल, क्योंकि वो नॉर्मली इंटरेस्ट नहीं लेता है इन द मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ अदर्स, राइट. बट अगर ऑडिटर को लगता है कि देयर बिकॉज ऑफ एनी रीजन ही हैज़ अ डाउट टू द इंडिपेंडेंस ऑफ द थर्ड पार्टी हु हैज़ प्रोवाइडेड एनी मटेरियल एविडेंस, एग्जाम्पल इनवॉइस ऑफ एन एसोसिएटेड कंसर्न, ही शुड एक्सरसाइज ग्रेटर विजिलेंस इन दैट matter. As an ordinary rule, the auditor should try to match करना चाहिए internal और external evidence को as far as practicable. When external evidence is not readily available to match, the auditor should see to what extent the internal evidence corroborate each other, right? So here क्या लिखा है? Audit evidence obtained externally is more appropriate from reliability point of view as compared to those which are obtained internally. The reason that the audit evidence obtained externally is more appropriate from the point of view of reliability is because there is very low risk that they can be altered or changed. Relevance and reliability के बारे में कुछ चीज़ें हम पढ़ेंगे. When audit evidence is primarily obtained from audit procedures performed during the course of audit, it may also include information obtained from other sources. तो जो ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके ऑडिट एविडेंस मिला है उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन जो ऑब्टेन किया है वो भी ऑडिट एविडेंस के अंदर आएगा. नेक्स्ट इज अबाउट रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी. या रेलेवेंस एंड उसके पहले के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि इंफॉर्मेशन में आपका अदर सोर्सेज से जो इन्फॉर्मेशन मिला है वो भी इंक्लूड होता है, जैसे कि प्रीवियस ऑडिट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस और फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स फॉर client and acceptance and continuance. The quality of audit evidence, जो quality है audit evidence की, very important. क्या जो quality audit evidence का जो quality है वो affected है by the relevance and reliability of information upon which it is based. तो relevance का मतलब क्या होता है? It deals with, what does it deals with? It deals with the logical connection with or bearing upon. So it deals with the
logical connection with or bearing upon the purpose of the audit procedure, and where appropriate the assertions under consideration. The relevance of information to be used at audit evidence may be affected by the direction of testing. For example, नीचे दिया हुआ है, if the purpose of an audit procedure is to test for an overstatement in the existence of valuation of accounts payable, testing the recording accounts payable may be relevant audit procedure. On the other hand, when testing for understatement in the existence and valuation of accounts payable, testing the recorded accounts payable would not be relevant, but testing such information as subsequent disbursement, unpaid invoices, supplier statements and unmatched receiving रिपोर्ट्स में बी रेलेवेंट. तो कौन से केसेस में ओवर स्टेटमेंट है तो जो हमारे पास है वो ही रेलेवेंट है, अगर अंडर स्टेटमेंट है तो बाकी के चीज़ें भी रेलेवेंट होती है. तो दैट इज़ वाई दे से कि रेलेवेंस डील्स विद द लॉजिकल कनेक्शन विद और बेयरिंग अपॉन द पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एंड वेयर अप्रोप्रिएट द असर्शंस अंडर कंसिडरेशन. The relevance of information to be used as audit evidence may be affected by the direction of testing, right? So a given set of audit procedures may provide audit evidence that is relevant to certain assertions but not for others. तो ये करेक्ट इनकरेक्ट के लिए इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स हो सकते हैं जो ऑडिट प्रोवाइड देगा, दैट ऑडिट एविडेंस देगा, एंड दैट ऑडिट एविडेंस इज रेलिवेंट टू सर्टेन assertions but not for others. For example, inspection of documents related to collection of receivables after the period end may provide audit evidence regarding existence and valuation but not necessarily cut off. तो कुछ assertions के रिलेटेड वो एविडेंस रेलेवेंट हो सकता है, कुछ के लिए नहीं हो सकता है. सिमिलरली, जब आप ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करते हो रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर असर्शंस इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग अनदर असर्शंस. क्या बोला मैंने? जैसे कि एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री के रिलेटेड एविडेंस मिला है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो सब्सटीट्यूट होगा रिगार्डिंग एविडेंस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री. सो दैट इज वाई सिमिलरली ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर असर्शन is not a substitute for obtaining audit evidence regarding another assertion. On the other hand, audit evidence from different sources of a different nature may often be relevant to the same assertions. तो कुछ cases होते हैं जहाँ पे ऑडिट एविडेंस जो डिफरेंट सोर्सेज से मिलते हैं या डिफरेंट नेचर का होता है वो ऑफन मे बी रेलेवेंट हो सकता है टू द सेम असर्शन. तो एक असर्शंस के लिए 2-3 जगह से आपको एविडेंस मिल सकता है. उसको हम दो चीज़ों से पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज टेस्ट ऑफ कंट्रोल. दे आर डिजाइन टू इवेल्युएट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल इन प्रिवेंटिंग और डिटेक्टिंग और करेक्टिंग मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट असर्शन level. Designing test of controls to obtain relevant audit evidence in and identifying conditions that indicate the performance of the control and deviation in conditions which indicate departure from adequate performance, right? So the presence or absence of these conditions can then be tested by the ऑडिटर. तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में क्या लिखा गया? पहले तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स का डेफिनेशन दिया गया. दे आर डिजाइन टू इवेल्युएट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल इन प्रिवेंटिंग, डिटेक्टिंग और कंट्रोलिंग मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट फाइनेंशियल एट असर्शन लेवल. जब आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल डिजाइन करते हो टू ऑब्टेन द रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस, इट इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग कंडीशंस दैट इंडिकेट द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंट्रोल एंड deviations and conditions which indicate departure from adequate performance. The presence or absence of these conditions can be tested by the auditor. अब substantive procedures को क्यों डिज़ाइन किया जाता है? Substantive procedures are designed to detect material misstatement at assertion level. They comprise of test of detailed and substantive analytical procedures. Deciding substantive procedures includes identifying conditions relevant to the purpose of the test, identifying conditions relevant to the purpose of the test that constitute a misstatement in the relevant assertion. So this is all about relevance. Next, about reliability. The reliability of information to be used as audit evidence and therefore of audit evidence itself influence होता है बहुत चीज़ों से. Influence है by the source and the nature and the circumstances under which it is obtained, including the controls over its preparation and maintenance where relevant, right? तो इन चीज़ों से अगर information reliable है कि नहीं और उसको audit evidence की तरह यूज़ करना है कि नहीं, ये इन चीज़ों से वो इन्फ्लुएंस है. सो व्हाट आई से the reliability of information to be used as audit evidence and therefore of audit evidence itself is influenced
by the source and its nature and the circumstances under which it is obtained, including the controls over the preparation and maintenance where relevant. Therefore, generalizations about the reliability of various kinds of audit evidence are subject to important exceptions. Even when information to be used as audit evidence is obtained from the sources external to the entity, circumstances may exist that could affect the reliability. For example, information obtained from an independent external source may not be reliable. वो reliable नहीं हो सकता if the source is not knowledgeable or a management expert may lack objectivity. So while recognizing that exceptions may exist, the following generalizations about reliability of audit evidence may be यूजफुल। तो वो क्या बोल रहे हैं कि कभी कभार क्या होता है, इन्फॉर्मेशन ना जब ऑब्टेन किया जाता है एक्सटर्नल सोर्सेज से तो वो रिलायबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। और कुछ जनरलाइजेशंस क्या होंगे, reliability of audit evidence is increased when it is obtained from independent sources outside the entity. Reliability of audit evidence that is generated internally is increased when the related controls, including those over its preparation and maintenance imposed by the entity are effective, right? अगर वो कंट्रोल्स भी इफेक्टिव है तो ऑडिट एविडेंस दैट इज जनरेटेड इंटरनली इज उसका reliability is increased. Next, audit evidence obtained directly by the auditor is more reliable than audit evidence obtained indirectly or by inference. Audit evidence in documentary form, whether paper or electronic or other medium, is more reliable than audit evidence orally. Audit evidence provided by original documents is more reliable than audit evidence provided by photocopies or facsimiles or documents that have been filmed, digitized, or otherwise transformed into electronic form, the reliability of which may depend on the controls over their preparation and maintenance. So this is all about reliability. Reliability के कुछ generations correct incorrect के लिए important होते हैं और reliability influence होता है इन सब चीज़ों से। रेलेवेंस में आप क्या देखोगे कि एक असर्शन के लिए रेलेवेंट होता है, एक के लिए नहीं हो सकता है। एक असर्शन से रिलेटेड आप एविडेंस ले दो तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब्सटीट्यूट होगा एविडेंस दूसरे असर्शन से रिलेटेड लेना। और कभी कभार ऑडिट एविडेंस डिफरेंट सोर्सेज से मिलता है, वो रेलेवेंट हो सकता है एक ही असर्शन से रिलेटेड। रेलेवेंस होता क्या, एक लॉजिकल कनेक्शन विद और बेयरिंग अपॉन द पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एंड वेयर अप्रोप्रिएट द असर्शन अंडर कंसिडरेशन। द रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस मे बी अफेक्टेड बाय द डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग। और जो ऑडिट एविडेंस का क्वालिटी है वो अफेक्ट होता है बाय द रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन अपॉन विच इट इज based, right? So this is all about relevance and reliability and types of audit evidence. Next, कुछ ये पूरा करेक्ट इनकरेक्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कुछ ऑब्जर्वेशंस अबाउट ऑडिट एविडेंस में हेल्प इन डिजाइनिंग अपॉन कौन सा टेक्निक अडॉप्ट करना चाहिए। जैसे कि there is nothing mysterious about the evidence which an auditor can obtain and on which he relies. It is a straightforward information. Some of it is obtained only by diligent effort, but all of इट इज़ ऑफ द कॉमन सेंस वेराइटी। तो यहाँ पे एविडेंस से रिलेटेड कोई भी मिस्टीरियस नहीं है। ऑडिटर क्या है, ऑब्टेन कर सकता है ऑडिट एविडेंस जिसके ऊपर उसको रिलाई करना है। ऑडिट एविडेंस एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन है जो कभी कभार मिल जाता है डिलिजेंट एफर्ट, बट ऑल ऑफ इट इज़ ऑफ अ कॉमन सेंस वेराइटी, ठीक है। ऑडिट एविडेंस जो है वो वेरीज इन रिलायबिलिटी व्हेन द ऑडिटर recalculates certain figures like depreciation or inventory valuation, he may be completely convinced about the reliability of the company's figures. However, information supplied agar by an employee may not be that reliable because he may have an interest in concealing rather than revealing the truth. This suggests that we must always be alert to the relative reliability of different kinds of evidence. So that is why evidence varies in reliability. Some evidence may be more difficult to obtain than other. It is relatively easy to put questions to employees who are present inside the company. It is easy to examine inventory on hand. It is more difficult to verify inventory stored elsewhere, right? So evidence may be difficult to obtain. It must be recognized that the available evidence
be persuasive and the evidence may not be conclusive. तो हमेशा आप ध्यान रखोगे जब आप एविडेंस लेते हो, अवेलेबल एविडेंस जो होता है वो परसुएसिव होता है एंड द एविडेंस मे नॉट बी कंक्लूसिव. तो इट मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड दैट द अवेलेबल एविडेंस बी परसुएसिव एंड द एविडेंस मे नॉट बी कंक्लूसिव. इन गिविंग ओपिनियन द ऑडिटर, क्यों कंक्लूसिव नहीं होता है? क्योंकि जब वो ओपिनियन देता है ऑडिटर नेसेसरली takes a calculated risk. He gets the best information reasonably available and forms his judgments accordingly. In fact, in auditing, it is very difficult and at times impracticable to obtain conclusive evidence both on account of time and cost constraints. This explains why auditor gives an opinion rather than some kind of guarantee or certificate. All he can state is that he has carefully examined the various assertions in the financial statements, obtained evidence what he in his professional judgment thought adequate or best available, and that he has considered that evidence judiciously in forming an opinion as to the reliability of financial statements. तो इसी वजह से ऑडिटर जो है ज़्यादातर परसुएसिव एविडेंस अवेलेबल रखता है दैन द कंक्लूसिव एविडेंस, क्योंकि इन डिफिकल्ट है, इम्प्रैक्टिकबल है बिकॉज ऑफ टाइम एंड कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स एंड एवरीथिंग, राइट. नेक्स्ट, ऑडिटर का जो अश्योरेंस है मे गेन इंक्रीज अश्योरेंस अगर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ऑफ अ डिफरेंट नेचर is consistent. In the circumstances, he may obtain a cumulative degree of assurance higher than what he attaches to the cumulatively एक higher assurance ले सकता है than which he attaches to the individual items of evidence by themselves. Conversely, when audit evidence obtained from one source is inconsistent with that obtained from another, further procedure may have to be performed to resolve the matter. The auditor should be thorough in his efforts to obtain audit evidence and he has to be objective in the evaluation. In selecting procedures to obtain evidence, he should recognize the possibility that the financial statements may be materially misstated. There should be a rational relationship. Between the cost of obtaining the evidence and the usefulness of the information obtained. So the cost of obtaining evidence and the usefulness of the information obtained. However, the matter of लेकिन rational relationship तो होना चाहिए, लेकिन the matter of difficulty and expense involved testing a particular item is not in itself a valid basis for omitting a procedure. तो इधर क्या बोलता है कि actually cost और usefulness, there should be a rational relationship between the cost of obtaining evidence and the usefulness of the information obtained. However, the matter of difficulty and expenses of the involved in testing a particular item is not in itself a valid basis for omitting a procedure. Next, when the auditor is in a reasonable doubt as to any assertion, he should attempt to obtain sufficient and appropriate audit evidence to remove such doubt. If he is unable to obtain evidence, he should express an unqualified, he should not express an unqualified opinion. अगर sufficient and appropriate audit evidence ले नहीं पा रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप unqualified opinion दे दोगे, आप एक modified opinion दोगे. These are all some generalizations about audit evidence. Next, what is negative assertions? Negative assertions are also encountered in the financial statements and the same may be expressed or implied. तो वो financial statements में होते हैं और वो expressed या implied हो सकते हैं. जैसे कि if it is stated कि there is no contingent liability, it would be an expressed negative assertion. On the other hand, if the balance sheet there is no item as building, it would be an implied negative assertion that the entity did not own any building on the balance sheet date. So negative assertions are also encountered in the financial statements and the same may be expressed or implied, right? Next we will talk about assertions. Assertions का definitions क्या है? Assertions refer to the representations by the management, explicit or otherwise, that are embodied in the financial statements as used by the auditor to consider the different types of potential misstatements. ठीक है, that may occur. तो assertions क्या है? Refers to the representations by the management, explicit or otherwise, that are embodied in the financial statement as used by the auditor to consider the potential types of
different types of potential misstatement. यूज ऑफ असर्शंस जो होता है वो इम्प्लिसिट हो सकता है या एक्सप्लिसिट हो सकता है. सो इन रिप्रेजेंटिंग दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल FRF. मैनेजमेंट को इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली मेक्स करना पड़ेगा असर्शंस रिगार्डिंग द RMPD, दैट इज रिकग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर of various elements of the financial statements and related disclosures. Assertions used by the auditor to consider the different types of potential misstatement that may occur fall into the following three categories. जैसे कि class of transactions and events. क्या बोला? Class of transactions and events, account balances and presentations and disclosures. Transactions जो हमारे P&L के item होते हैं वहाँ उसके क्या क्या आप देखोगे कि अकर हुआ है, कंप्लीटनेस, एक्यूरेट है, कट ऑफ है, क्लासिफिकेशन है. सो एक्यूरेंस, कंप्लीटनेस, कट ऑफ, एक्यूरेसी एंड क्लासिफिकेशन. अकाउंट बैलेंस में और एग्जिस्ट करता है, दैट इज योर बैलेंस शीट आइटम्स. राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन एंड अलोकेशन. प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में अकरेंस एंड राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, completeness, classification and understandability and accuracy and valuation, right? तो इसमें सारे असर्शंस आ गए. देखो अकरेंस भी आ गया, कंप्लीटनेस भी आ गया, एक्यूरेसी भी आ गया, कट ऑफ नहीं आएगा, क्लासिफिकेशन भी आ गया, एग्जिस्टेंस नहीं आएगा, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस आ गया एंड एवरीथिंग एल्स. वैल्यूएशन, सिर्फ वैल्यूएशन भी आ गया, राइट? सो दीज आर द असर्शंस रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर. असर्शंस अबाउट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स फॉर द पीरियड अंडर ऑडिट. क्या लिखोगे? पहले तो अकरेंस क्या होता है? अकरेंस क्या होता है? वो ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स दैट हैव बीन रिकॉर्डेड, हैव बीन अकर्ड एंड इट इज पर्टेनिंग टू द एंटिटी. कंप्लीटनेस, ऑल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स शुड हैव बीन रिकॉर्डेड, that should have been recorded have been recorded. Accuracy, amounts and other data relating to recorded transactions and events have been recorded appropriately. record किया गया. Transactions and events have been recorded in the correct accounting period, that is cut off, correct accounting period. और transactions and events have been recorded in proper accounts is your classification. Account balances से related कुछ assertion, जैसे कि existence में आप क्या देखोगे? Asset, liability and equity interest exist करता है या नहीं? Asset, liability and equity interest. Rights and obligations में क्या लिखोगे? The entity holds or controls the rights to asset, liability and to assets and the liabilities are the obligations of the entity. Completeness में क्या देखोगे कि सारे ये तीन चीज़ें that should have been recorded have been recorded. Valuation और allocation में assets, liabilities and equity interest that are included in the financial statement at appropriate amount, at any resulting valuation or allocation adjustments are appropriately recorded. Presentation or disclosure में occurrence and rights and obligations, disclosed events, transactions and other matters are occurred and it pertains to the entity. Completeness में that should have been included in the financial statements have been included, that is the disclosures. At classification and understandability में financial information is appropriately presented and described and disclosed are clearly expressed. Accuracy and valuation, financial and other information also are disclosed fairly and at appropriate amounts. The auditor may use assertions that described above or may express them differently provided all aspects described above have been covered. For example, the auditor may choose to combine the assertions about transactions and events with the assertions about account balance. और अभी कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे कि वी फाइंड इन बैलेंस शीट की अंडर करंट एसेट एक कैश इन हैंड 8,000 का है, तो आप क्या असर्शंस लोगे कि द फर्म कंसर्न हैड 8,000 इन हैंड इन वैलिड नोट्स एंड कॉइन्स ऑन द बैलेंस शीट डेट. सो दैट वुड बी योर एग्जिस्टेंस. Cash was free and available to the expenditure of the firm, but the books of accounts show a cash balance of identical amount at the end of the day on which balance sheet is drawn up. इधर के assertions क्या होंगे कि फर्म ओन करता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट ये है, प्लांट एंड मशीनरी फिजिकली एग्जिस्ट करता है, एसेट को यूटिलाइज किया जाता है कंपनी के लिए, चार्ज ऑन डेप्रिसिएशन उसी ईयर का चार्ज किया हुआ है और अमाउंट ऑफ जो डेप्रिसिएशन है वो एक करेक्ट बेसिस पे कैलकुलेट किया है, राइट? The description does not give us a complete picture, that is the name of the lender, the nature of security, the rate at which interest is payable. A specific mention is required about these things for proper appreciation of items and the financial position.
So this is all about assertions, right? Next we will be talking about, okay, one second. Okay, let's talk about external confirmation as substantive procedures. अच्छा, substantive procedures का पूरा टॉपिक हम इधर से कवर कर लेते हैं. Continuing with substantive procedures may be defined as those audit procedures that are designed to detect material misstatement at assertion level. तो अगर material misstatement detect करना है at assertion level, then you design the substantive procedures, right? These substantive procedures comprises of test of details, that is your class of transactions, account balances and disclosures, and substantive analytical procedures, right? Irrespective of the assessed risk of material misstatement, the auditor क्या करेगा, आपने एसेस किया है नहीं किया, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट द ऑडिटर क्या करेगा, डिज़ाइन एंड परफॉर्म करेगा सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स फॉर ईच मटेरियल, वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर ईच मटेरियल क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर्स. दिस रिक्वायरमेंट रिफ्लेक्ट्स दैट द ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रिस्क, ऑडिटर का जो असेसमेंट ऑफ रिस्क है वो जजमेंटल है और मे नॉट आइडेंटिफाई ऑल रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. वाई? बिकॉज देयर आर इनहेरेंट limitations to internal control, including management's override. Depending on the circumstances, the auditor may determine that performing only substantive analytical procedures will be sufficient to reduce audit risk to an acceptably low level. For example, where the auditor's assessment of risk is supported by audit evidence from test of controls, या फिर the auditor determine कर सकता है कि वो perform करे only test of details are appropriate. Yeah, a combination of substantive analytical procedures and test of details are most responsive to the assessed risk, right? तो ये भी डिटरमाइन ऑडिट कर सकता है कि दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये मोस्ट रिस्पॉन्सिव होंगे टू दी एसेस्ड रिस्क. नेक्स्ट, सब्सटैंटिव जो एनालिटिकल प्रोसीजर्स है वो जनरली अप्लाई करते हैं टू अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन दैट टेंड टू बी predictable over time. हमने already पढ़ा था, that is very frequent in time, right? So substantive analytical procedures are generally more applicable to volume of transactions that tend to be more predictable over time. Establishes requirements and guidance as per SA 520 on the application of analytical procedures during an audit. The nature of risk and assertion is relevant to the design of test of details. तो रिस्क का जो नेचर है और असर्शन का जो नेचर है वो रेलेवेंट है जब हम टेस्ट ऑफ डिटेल्स डिज़ाइन करते हैं. सो द नेचर ऑफ द रिस्क एंड असर्शन इज रेलेवेंट to the design of test of details. For example, test of details related to the existence or occurrence assertions may involve selecting items contained in the financial statements amount and obtaining relevant audit evidence. On the other hand, test of details related to the existence assertion may involve selecting from the items that are expected to be included in the relevant financial statement amount and investing whether they are included. Because the assessment of risk of material misstatement takes account of internal control भी लेता है, तो the extent of audit procedures may need to be increased whether the results from test of control when the increase करेंगे हम अपने audit procedures को when the results from test of controls are unsatisfactory. जब आप test of details design करते हैं, the extent of testing is ordinarily thought of in terms of सैम्पल साइज. तो एक्सटेंट कितना है वो सैम्पल साइज पे निर्भर करता है. However, other matters are also relevant, including whether it is more effective to use the other selective means of testing. तो ये सारी चीज़ें आप देखोगे जब आप डिज़ाइन एंड परफॉर्म करना चाहते हो सब्सटैंटिव procedure. So what is the question? It will come, irrespective of the assessed risk of material misstatement, auditor shall design and perform substantive procedures for each material class of requirement. क्या है कि ये सब है. ऑडिटर क्या कर सकता है, ये तीन चीज़ कर सकता है. ज़्यादा एप्लीकेबल कहाँ पे है, नेचर ऑफ रिस्क एंड असर्शंस रेलेवेंट है टू द डिज़ाइन ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल. देन लास्ट बाकी के 2 पॉइंट. नेक्स्ट, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन को सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स की तरह परफॉर्म करना, राइट? So external confirmation as substantive procedures. The auditor shall consider whether external confirmation procedures are to be performed as substantive audit procedures. The auditor ये चीज़ देखेगा, कंसिडर करेगा कि क्या मेरे को एक्सटर्नल कन्फर्मेशन के जो प्रोसीजर्स है वो मेरे को सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स की तरह परफॉर्म करना है कि नहीं. तो एक्सटर्नल confirmation procedures frequently are relevant when addressing assertions associated to account balances and
and their elements, but need not be restricted to these items, right? For example, auditor may request external confirmation of terms of agreement, contracts or transactions between an entity and other प्रोसीजर्स. तो दैट इज़ वाई जो बोलते हैं कि एक्सटर्नल कन्फर्मेशन के जो प्रोसीजर्स है फ्रीक्वेंटली रेलिवेंट होते हैं वो असर्शन एड्रेस करने के लिए, दैट इज एसोसिएटेड विद account balances and their elements, but need not be restricted to these items. External confirmation procedures may also be performed to obtain audit evidence about the absence of certain conditions. For example, a request may specifically seek communication that no side agreements exist that may be relevant when entities revenue cutoff assertion. Next, other situations when external confirmation procedures may provide relevant audit evidence in responding the assessed risk of material misstatement include कहाँ पे आप एक्सटर्नल कन्फर्मेशन ले सकते हो? बैंक बैलेंसेस के लिए. तो बैंक बैलेंसेस एंड अदर इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू बैंकिंग रिलेशनशिप्स, अकाउंट रिसीवेबल दैट इज डेटर्स एंड द टर्म्स, इन्वेंट्री जो थर्ड पार्टी हेल्ड करती है एट द बॉन्डेड वेयर हाउस एट फॉर प्रोसेसिंग और ऑन consignment, property title deeds held by the lawyers or financiers for safe custody or as security, investment held for safekeeping by third parties or purchased from stockbrokers but not delivered at the balance sheet date, amount due to lenders that is sundry creditors including relevant terms of repayment and restrictive covenants, accounts payable balances and टर्म्स. या तो दीज आर सम ऑफ द सिचुएशंस जहाँ पे एक्सटर्नल कंफर्मेशन के जो प्रोसीजर्स है वो रेलेवेंट होंगे टू एसेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट और टू रिस्पॉन्ड देम. बैंक बैलेंसेस, अकाउंट रिसीवेबल बैलेंसेस, इन्वेंट्री हेल्ड बाय थर्ड पार्टी, property title deeds, investment held for safekeeping by third parties or purchased from stockbrokers but not delivered at the balance sheet date, amount due to lenders including the relevant terms of repayment and restrictive covenants, account payable balances and the terms. Although external confirmation procedures may provide relevant audit evidence relating to certain assertions, there are some assertions for which external confirmations provide less relevant audit evidence. For example, relating to the recoverability of the account receivable balance than they do for their existence. तो एक्सटर्नल कन्फर्मेशन जो है कुछ असर्शंस के लिए ऑडिट एविडेंस दे सकते हैं लेकिन कुछ असर्शंस के लिए वो लेस ऑडिट एविडेंस देंगे. ऑडिटर मे डिटरमाइन दैट एक्सटर्नल कन्फर्मेशन प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड वर अगर एक पर्पज के लिए परफॉर्म करोगे इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस अबाउट द अदर मैटर्स एज वेल. सच कंसिडरेशंस मे इन्फ्लुएंस द ऑडिटर्स डिसीजन अबाउट वेदर टू परफॉर्म दीज प्रोसीजर्स और नॉट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने के चांसेस है. व्हाट आर द फैक्टर्स दैट मे असिस्ट द ऑडिटर इन डिटरमाइन कि क्या मेरे को एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर्स परफॉर्म करने चाहिए एज सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स. तो वो फैक्टर्स क्या होंगे? पहले तो कंफर्मिंग पार्टी का नॉलेज देखो. द कंफर्मिंग पार्टीज नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, रिस्पॉन्सेज मे बी मेड मोर रिलायबल इफ provided by a person or the confirming party who has requisite knowledge about the information being conveyed. The ability of willingness होना चाहिए of the intended confirming party to respond. अब willingness के लिए क्या क्या चीज़ें देखोगे? जैसे कि एग्जाम्पल, confirming party जो है may not accept responsibility for responding to a confirmation request, may consider responding too costly or time consuming, may have concerns about the potential legal liability resulting from responding, may account for transactions in different currencies, or may operate in an environment where responding to confirmation request is not a significant aspect of day-to-day operations. In such situations, confirming parties may not respond or may respond in a casual manner or may attempt to restrict the reliance placed on the रेस्पॉन्स. तो ये फैक्टर भी कंसिडर आपको करना चाहिए टू डिसाइड कि आपको रियली एक्सटर्नल कन्फर्मेशन प्रोसीजर्स में जाना है कि नहीं. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटेंडेड कन्फर्मिंग पार्टी, द ऑब्जेक्टिव देखना चाहिए ऑफ द इंटेंडेड कन्फर्मिंग पार्टी. इफ द कन्फर्मिंग पार्टी इज अ रिलेटेड पार्टी टू द एंटिटी, responses to confirmation request may be less reliable. So you should see the objectivity as well. So पहले क्या देखोगे? Confirming parties knowledge of the subject matter, the ability of willingness and the objectivity of the intended confirming party. अब substantive procedures related to financial statement, closing process से related आपकी क्या substantive procedures
हो सकते हैं. The auditor's substantive procedures shall include the following audit procedures related to the financial statement closing process: agreeing or reconciling the financial statements with underlying accounting records. तो agree or reconcile करो the financial statements with the underlying accounting records. फिर examining the material journal entries and other adjustments. Examining material journal entries and other adjustments, right? Examining material journal entries and other adjustments. Examining material journal entries and other adjustments made during the course of preparing financial statements. The nature and also the extent of the auditor's examination of journal entries and other adjustments depends on the nature and complexity of the entity's financial reporting process and the related risk of material misstatement. तो nature and extent depend करता है nature and complexity of the entity's financial reporting. तो ये आपके substantive procedures हो गए related to financial statement closing process, जैसे कि अग्री या रिकनसाइल करना और एग्जामिन करना मटेरियल जर्नल एंट्रीज, राइट? वो हमने देख लिया. नेक्स्ट सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स क्या होगी अगर आपको रिस्पॉन्ड करना है सिग्निफिकेंट रिस्क. सो व्हेन द ऑडिटर हैज डिटरमाइंड दैट असिस्ट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट द असर्शन लेवल इज अ सिग्निफिकेंट रिस्क, द ऑडिटर शैल परफॉर्म सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स दैट आर specifically responsive to that risk. When the approach to a significant risk consists only of substantive procedures, those procedures shall also include test of details. तो सिग्निफिकेंट रिस्क के लिए सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स के साथ साथ टेस्ट ऑफ डिटेल्स भी होंगे. द अबव पैराग्राफ रिक्वायर्स द ऑडिटर टू परफॉर्म substantive audit procedures that are specifically responsive to the risk that the auditor has determined to be the significant risk. Audit evidence in the form of external confirmations received directly by the auditor from the appropriate confirming party may assist the auditor in obtaining audit evidence with a higher level of reliability that the auditor requires to respond to significant risk of material misstatement, whether due to fraud or error. Right? So in obtaining audit evidence from the substantive procedures, auditor is concerned about the following assertions. So this is all about your substantive procedures, right? Next we will discuss about the risk assessment procedures, जिसका एक part substantive procedures होता है. So what is risk assessment procedures? Risk assessment procedures refers to those audit procedures performed to obtain an understanding of the entity and its environment, including internal control, to identify and assess risk of material misstatement, whether due to fraud or error at the financial statement level and assertion level. Further audit procedures comprises of test of controls, substantive procedures that includes test of details, and substantive analytical procedures. What is test of controls? Test of controls may be defined as an audit procedure designed to evaluate the operating effectiveness of controls and preventing or detecting and correcting material misstatement at the assertion level. When to design? अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि आपको कब डिज़ाइन और परफॉर्म करना चाहिए टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स की, कब ज़रूरत होती है. ऑडिटर शैल डिज़ाइन एंड परफॉर्म टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स ताकि वो ऑब्टेन कर पाए सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एज टू द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ रेलेवेंट कंट्रोल. जब ऑडिटर का असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट असर्शन लेवल इंक्लूड करता है एक्सपेक्टेशन की दैट कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली. तो अगर आपको लगता है कि हाँ इस एंटिटी के कंट्रोल ऑपरेट करते हैं इफेक्टिवली, तो आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स डिज़ाइन करोगे. अगर आपको लगता है कि सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स अलोन कैन नॉट प्रोवाइड सब्सटैंटिव appropriate audit evidence at the assertion level, तब आप test of controls आप design and perform कर सकते हो. So again, the auditor's assessment of risk of material misstatement at the assertion level includes an expectation that the controls are operating effectively. That is, the auditor intends to rely on them in determining the NTE of the substantive procedures, or substantive procedures alone cannot provide sufficient and appropriate audit evidence at the assertion level. A higher level of assurance may be sought. About the operating effectiveness of control. कैसे? When the approach adopted consists primarily of test of controls, in particular when it is not possible or practicable to obtain sufficient and appropriate audit evidence only from the substantive audit procedures. तो correct incorrect के लिए important है. एक higher level of assurance ले सकते हो about the operating effectiveness of controls when the approach adopted consists primarily of test of controls, in particular when it is not practicable or possible to obtain evidence only from the substantive procedures. What is the nature and extent of
टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स इन डिज़ाइनिंग। जब आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स को डिज़ाइन या परफॉर्म करोगे, ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर परफॉर्म करेगा अदर ऑडिट प्रोसीजर्स इन कॉम्बिनेशन विद इंक्वायरी, ताकि वो ऑब्टेन कर पाए एविडेंस अबाउट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स, इंक्लूडिंग हाउ द कंट्रोल्स वर अप्लाइड at relevant times during the period under the audit, the consistency with which they were applied and by whom or by what means they were applied, determine whether controls to be tested upon other controls, and if so, whether it is necessary to obtain audit evidence supporting the effective operation of those indirect control as well. तो जब आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल को डिज़ाइन या परफॉर्म करते हो, ऑडिटर ये दो चीज़ करेगा, परफॉर्म करेगा ऑडिट प्रोसीजर्स इन कॉम्बिनेशन विद इंक्वायरी, फिर डिटरमाइन करेगा कि जो कंट्रोल्स टू बी टेस्टेड डिपेंड करता है अपॉन अदर कंट्रोल, एंड इफ सो whether it is necessary to obtain audit evidence supporting the effective operation of those indirect controls. ये एक important है. Inquiry alone is not sufficient to test the operating effectiveness of controls. Accordingly, other audit procedures are performed in combination with inquiry. In this regard, inquiry when combined with inspection or re-performance may provide more assurance than inquiry and observation. तो inquiry को inspection या re-performance के साथ जोड़ोगे तो वो इंक्वायरी एंड ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा अश्योरेंस देगा. Since an observation is pertinent only to that point of time at which it is made, the nature of the particular control influences the type of procedure required to obtain audit evidence about whether the control was operating effectively. When more, very very important, जब when more persuasive audit evidence is needed regarding the effectiveness of control. अगर आपको ज़्यादा persuasive audit evidence चाहिए regarding the effectiveness of controls, it may be appropriate to increase, आपको increase करना पड़ेगा the extent of test of control as well as the degree of reliance on those controls. Increase the extent of test of control as well as the degree of the reliance on control. Matters the auditor may consider. कौन से matters होंगे जो auditor को consider करेंगे in determining कि कितना test of controls होना चाहिए. So the matter the auditors may consider in determining the extent of test of controls include the following: the frequency, length of time, expected rate of deviation, relevance and reliability, and last point, right? So the frequency of the performance of the control by the entity during the period, the length of time during the audit period that the auditor is relying on the operating effectiveness of the control, the expected rate of deviation from a control, the relevance and reliability of the audit evidence to be obtained regarding the operating effectiveness of control at the assertion level, the extent to which audit evidence is obtained from test of other controls related to the assertion. टाइमिंग कब होगी? ऑडिटर शैल टेस्ट द कंट्रोल्स फॉर द पर्टिकुलर टाइम. एक पर्टिकुलर टाइम का भी टेस्ट कर सकता है या थ्रू आउट द पीरियड फॉर विच द ऑडिटर इंटेंड्स टू रिलाई ऑन दोज कंट्रोल्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एन अप्रोप्रिएट बेसिस फॉर द ऑडिटर्स इंटेंडेड रिलायंस. ऑडिट एविडेंस अगर पर्टेन करता है ओनली टू अ पॉइंट ऑफ टाइम may be sufficient for the auditor's purpose. For example, when testing controls of the entity's physical inventory counting at the period, and if on the other hand auditor intends to rely on the control over a period, tests that are capable of providing audit evidence that our control operate effectively at relevant times during the period are appropriate. Such tests may include the test of entities monitoring of controls. तो या तो controls at a point of time हो सकता है या throughout the period, that is ओवर अ पीरियड हो सकता है. अगर पर्टेन करता है ओनली टू अ पॉइंट ऑफ टाइम तो सफिशिएंट होगा ऑडिटर्स पर्पस के लिए कि ये टेस्ट बराबर काम करे. अगर अदर हैंड अगर ऑडिटर इंटेंड करता है कि उसको रिलाई करना चाहिए ऑन अ कंट्रोल ओवर अ पीरियड, तो टेस्ट दैट आर केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग ऑडिट एविडेंस दैट द कंट्रोल्स ऑपरेटेड इफेक्टिवली एट रेलेवेंट टाइम्स ड्यूरिंग द पीरियड वो अप्रोप्रिएट होंगे, राइट. ऑन दी पूरा साल का कवर करना है तो टेस्ट को इंक्लूड कर सकते हो, टेस्ट ऑफ द एंटिटीज ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स. अभी ऑडिट एविडेंस जो आपने प्रीवियस ऑडिट से ऑब्टेन किया उसको क्या आप यूज़ कर सकते हो? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ पॉइंट्स भी डिस्कस किए हुए हैं. सो इन डिटरमाइनिंग whether it is appropriate to use audit evidence about the operating effectiveness of controls obtained in the previous audit, and if so, the length of the time period that may elapse before retesting a control, auditor consider करेगा the following: the effectiveness, ज़्यादातर सबका effectiveness ही वो देखेगा. क्या देखेगा?
The effectiveness of other elements of internal control, including the control environment, the entities monitoring of controls and the entities risk assessment process. तो effectiveness देखेगा इन सब चीज़ों का. फिर देखेगा the effectiveness of general IT controls. The effectiveness of general IT controls फिर देखेगा the effectiveness of control and its application by the entity, including the nature and extent of deviation and the application of the controls noted in previous audit. जो deviations previous audit में note किए थे वो, and whether there have been अगर personal changes है that effectively affect the application of control. साथ ही साथ देखेगा कि the risk arising from the characteristics of control, including whether it is manual or automated, whether the lack of change in a particular control poses a risk due to changing circumstances, the risk of material misstatement and the extent of reliance on the control. तो ये सारी चीज़ें कंसिडर करोगे अगर आपको देखना है कि आप ऑपरेटिंग effectiveness of controls previous audits का आप यूज़ कर सकते हो कि नहीं. The effectiveness of other elements of internal control, including the control environment, the entity's monitoring of controls and the entity's risk assessment process, the risk arising from the characteristics of the control, including whether it is manual or automated, the effectiveness of general IT controls, the effectiveness of the control and its application by the entity, including the nature and extent of deviations in the application of controls noted in the previous audits, and whether there have been personal changes that significantly affect the application of control, whether there is a lack of change in a particular control poses a risk due to the changing circumstances, risk of material misstatement and the extent of reliance on the controls. If the auditor plans to use audit evidence from previous audits about the operating effectiveness of specific controls, the auditor shall establish the continuing relevance of the evidence by obtaining audit evidence about whether significant changes in those controls have occurred. अगर आप प्रीवियस ऑडिट का ऑडिट एविडेंस ले रहे हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए हैं कंट्रोल्स have occurred subsequent previous audit ख़त्म होने के बाद अगर कुछ changes हुए तो वो आप देखोगे. अभी आपको evaluate करना है the operating effectiveness of control. It is important for correct incorrect. When evaluating the operating effectiveness of relevant control, the auditor shall evaluate whether the misstatements have been detected by substantive procedures. अगर misstatements detect हुए हैं by substantive procedures, it indicates that the controls are not operating effectively. The absence of misstatement, अगर misstatement detect नहीं हुए तो it does not provide audit evidence that the controls related to the assumptions are being effective. A material misstatement detected by the auditor's procedures is a strong indicator of the existence of the significant deficiency in internal control. See, अगर substantive procedures से misstatement detect होते हैं तो हाँ controls operate नहीं करते हैं effectively. लेकिन अगर misstatements detect नहीं होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये audit evidence देता है कि that controls related to that assumptions are being tested as effective. So correct and incorrect के लिए important है. Next, what are the specific inquiries जो auditor करेगा when there is deviation from controls detected? So when the deviation from the controls upon which the auditor intends to rely are detected, the auditor shall make specific inquiries to understand these matters and their potential consequences as well, and will determine कि whether कि क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म किए गए हैं, प्रोवाइड एन अप्रोप्रिएट बेसिस फॉर द रिलायंस, क्या एडिशनल टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स की ज़रूरत है, क्या पोटेंशियल रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट नीड टू बी एड्रेस्ड है यूजिंग द सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स, राइट. सो व्हाट आर द 3 थिंग्स द ऑडिटर विल कंसिडर अगर डिविएशंस पाए गए हैं. द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स दैट हैव बीन प्रोवाइडेड performed provide an appropriate basis for the reliance on the controls, additional test of controls are necessary, or the potential risk of material misstatement need to be addressed using substantive procedures as well.